जय हिंद दोस्तों, रेडी रेडी जैस्मिन भाई। परफेक्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज एक बहुत ही मेरे ऑनलाइन खास दोस्त, एक होता है खास दोस्त तो है ही है, मगर ऑनलाइन खास तौर से, क्योंकि अक्सर हम टीवी चैनल्स पे या कहीं पे ऑनलाइन मिले हैं। हम आज भी हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। इनको आप सब जानते हैं, तो किसी तारुफ के ये मोहताज है ही नहीं, बिल्कुल भी दूर से दूर तक। ये एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े ही बेहद ही अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये टीवी पर्सनालिटी हैं। इनके एस्पेक्ट्स आप सुनेंगे, आपने इनको बहुत रियलिटी शोज में देखा होगा। इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे भाई इतनी सारी चीजें, सो मेनी फैसेट्स टू हिज पर्सनालिटी, ये कैसे हैंडल करते हैं। और कई चीजें जो अभी मैंने अनफोल्ड नहीं करी हैं, वो हमें गुफ्तगू के दौरान धीरे धीरे हम अनफोल्ड करते रहेंगे। जी हाँ, आपने सही बोला, सही पहचाना। इनका नाम है मिस्टर तहसीन पूनावाला। जो शुक्रिया तहसीन भाई शुक्रिया बहुत बहुत, और हमारे डालने के लिए। और जय हिंद तहसीन भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेजर साहब, एंड इट्स सच अ प्लेजर कि मैं आपके साथ आज यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे शिरकत किया। तो आपके साथ शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए थैंक यू। एंड आई होप कि आपके द्वारा जो आपके सारे ऑडियंसेस है उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तहसीन भाई, ये बताइए हमको कि आप दरअसल, पहली बात तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ इसलिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं। और जब आप बोलते हैं, भला ही टीवी पे हो कहीं पे भी हो, जब भी मैं आपको बोलते हुए सुना है, आप हमेशा अपने फैक्ट्स, आपका डेटा, आपकी स्टैटिस्टिक्स, आपके फिगर्स, वो बिल्कुल आपकी जबानी यूं होते हैं, यूं ऑन योर फिंगर टिप्स। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं, थोड़ा आपके बचपन पे ले जाते हैं आपको। क्या आप बचपन से ही इतना अच्छा बोलते थे? क्या आपको बचपन से ही शौक था कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लें और एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी निकल कर आई इसकी वजह से? पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल शौक नहीं था, वो मजबूरन करना पड़ता था। हाँ नहीं, ऐसे में नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए वरना इट्स इम्पोर्टेंट, बट नहीं, मेरे पढ़ाई लिखाई में इतना शौक नहीं था। मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ करता था टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व था बचपन से ही। एलोक्यूशंस में मैं काफ़ी भाग लेता था, स्कूल डिबेट्स में मैं भाग लेता था। और जो ये एस्पेक्ट है कि मुझे मेरे पास फिगर्स होते या मेरे पास तथ्य होते, इनको मैं जब डिबेट में आता हूँ, आई डोंट कम ऑन द डिबेट कि मुझे सिर्फ टीवी पर आना है। मेरा मकसद है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं आवाम के सामने रखूँ। ये एक जमहूरियत है और आवाम को ये फैसला करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरा कोई जजमेंट नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, बट वो तथ्यों के आधार पर रखना चाहिए। इसलिए मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करता हूँ। मेरी एक टीम है जो मेरी मदद करती है, तो मैं रिसर्च के बेसिस पे आता हूँ। पर ये जो रिसर्च करने की मेरी आदत है, ये पहले से बचपन से है। जी जी। जी तो जी। आप ये बताइए कि आप, जैसे आपका योर नेम सजेस्ट पूनावाला है, तो इससे थोड़ा हमको समझाएगा अपने नाम के पीछे पूनावाला। तो आप पूना के निवासी हैं और आप तो दर्शक जाना चाहेंगे इसके लिए, बट वेरी इंटरेस्टिंग सरनेम यू हैव इन फैक्ट। So they would like to, because I did my graduation from Pune, by the way, Oh, and I you was because best of Pune which talent in the college? year. I was in Which Ferguson college? College, Tehseen bhai. Oh, you're in I was in FC then. Ferguson College, FC. Yeah. FC. Yeah. Ji. FC is a beautiful college. I was in Yes. Warriors. I know. I'm well aware of that. I'm well Yes. aware of that. I was going to come to that. Yeah. And So, when I contacted you, I did my full thesis on you, and then I contacted you. In fact, when I messaged you. I was in Warriors, but FC is a great college. और जिनको नहीं पता, ये FC जो है डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट, जब ये खुला था, ये उस वक्त खुला था जब नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में बढ़ रहा था। और जिन लोगों ने खोला था, जिन कांग्रेस के लीडर्स ने, उस वक्त के कांग्रेस के लीडर्स ने खोला था, इसका मकसद था कि भारतीयों को एजुकेशन मिले। तो द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो फर्गुसन कॉलेज और अन्य कॉलेजेस को चलाता है वहाँ पर, इसलिए पूना इज एन एजुकेशनल हब। और काफ़ी हमारे भारत के जो हमारे बच्चे, विदेश से बच्चे, वो आते हैं इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए। तो फर्गुसन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। सवाल पूनावाला का ऐसा है कि इन आर कम्युनिटी, सो बिकॉज ऑफ आर, तो जो बिजनेस करता है जिस एरिया से है, वो नाम वो सरनेम ले लेते हैं।
क्योंकि हम पूना से, उस वक्त पूना था, अभी तो ऑफकोर्स पुणे हो गया, तो वो पूनावाला हो गया। वरना हमारी कम्युनिटी में बाटली वाला भी है, टायर वाला भी है, सोडा वाला भी है। तो जो बिजनेस करते हैं उस हिसाब से होता है। सो thankfully we became Poonawala because हम पूना में थे, so that was the important thing. So you're Bora Muslims basically. No, so it's a little complicated. Memons. No, we are not Memons or Bora Muslims. We are Aga Khani Muslims. However, we come down from the Parsi descent. So from Parsi descent, Aga Khani Muslims. So Aga Khani are Shias, but बहुत जगहों पर आगा खानी प्रोसिक्यूट भी होते हैं बिकॉज इनको मुस्लिम्स नहीं माना जाता है, बट आगा खानी बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं, एक्सट्रीमली लिबरल मुस्लिम्स होते हैं। और एक एग्जांपल दे दूं, अभी के जो वर्तमान आगा खान साहब है, उनके जो ग्रैंडफादर जब वे थे, उन्होंने 1800s में कहा था कि अगर आपको एक लड़का और एक लड़की हो, 1800s में कहा था, तो लड़की की एजुकेशन कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी। तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी। 1800s में कहा गया था कि जब आप प्रेयर्स करने के लिए जहाँ जाते हो, तो लड़की क्या पहनती है वो लड़की का मामला है, किसी को अधिकार नहीं मॉरल पुलिस करने का। सो वुमेन कैन कम, दे प्रे अलॉन्ग विथ मेन, जीन्स पहने, स्कर्ट पहने, ड्रेसेस पहने, किसी को अधिकार नहीं है मॉरल पुलिसिंग का। आगा खान साहब इंसिडेंटली जिस इंस्टीट्यूट के आपके डैडी वाइस चांसलर थे, एएमयू, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से आगा खान साहब, दैट इज आगा खान 3. So it's a very, very, very progressive gentleman who had an important role in the Indian freedom struggle. So he was, so that is the community. However, we come from a Parsi descent. अब वो क्यों आगा खानी, वो अलग स्टोरी है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब महात्मा गांधी जेल में थे, वो आगा खान पैलेस में थे। दिस इज इन पूना। सो आगा खान साहब ने मेरे ग्रैंडफादर को कहा उस वक्त कि आप बापू और कस्तूरबा का, यू टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि बा और बापू दोनों जेल में थे। तो मेरे ग्रैंडफादर, ही वाज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। तो आगा खान साहब का जब उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर रहिए, तो माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर इज नॉट माय पैटर्नल ग्रैंडमदर बट माय ग्रैंडफादर्स सेकंड वाइफ, they stayed at Aga Khan Palace and they took care of Gandhi and Bapu and Ba. Ba died in Aga Khan Palace. So the last rites, everything was done by my, part of it was done by my family. And we got the title of Jamadar. गुजरात में जमादार होता है हेड ऑफ द पुलिस, जो ध्यान रखते हैं, तो वो वहां पे टाइटल भी मिला था, जमादार टाइटल मिला था गांधी का, बापू का ध्यान रखने के लिए। और उसके बाद ऑफ कोर्स बापू डिप्रेस्ड थे, थोड़ा लो थे, उनकी वाइफ शी हैड पास्ड अवे, देन ही वेंट टू पंचगनी फॉर टू टेक अ ब्रेक, ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। सो व्हेन ही वाज इन जेल, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर टेकिंग केयर ऑफ बा एंड बापू। What a heritage, what a history. I mean, that's so interesting. That is really, very interesting. You know, मेरे को मालूम था that you're not Boras. मेरे को डाउट इसलिए आया क्योंकि जब आपने जिक्र किया कि हमारी कम्युनिटी में जो आपने सोडा वाला का नाम लिया, तो आई नो फॉर अ फैक्ट सोडा वालास आर एक्चुअली बोरास. So no, वो सब हमारी कम्युनिटी में सिंधी नेम्स भी है. So you'll have a Lalani, you'll have Sindhi names, you'll have what are considered Hindu names. So you'll have Rahul, Manish, Atul as first names. It's a very mixed community. It's not a very in that sense conservative community. So if you see my mother, I'm an atheist, मैं नास्तिक हूँ, but if you see my mother, तो गणपति अभी, क्योंकि अब गणेश फेस्टिवल शुरू होने वाला, गणेश चतुर्थी, तो गणपति की पूजा करेगी, गणपति इज बॉट होम, दिवाली में घर सजाया जाता है, नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द पारसी हेरिटेज, ईद इज ऑफ कोर्स सेलिब्रेटेड, Christmas is celebrated. So it's a family that, it's a community, even as a community, everything is celebrated. तो दिवाली में जो मॉस्क है, जमात खानों से कहा जाता है, उसको, उस पे लाइट होती है, वहाँ पे दिए होते हैं, and it's a जमात खाना, but वो होता है. So it's a community that is very integrated. So if you even study the Aga Khan community, again, I'm an atheist, but when you study the community, you'll never see that they're involved in riots because they're always very in society. They don't stay separate. They stay with others. So they're very mixed with society. So it's a very normal thing. So that's how the community is, which is good because you must be progressive. Of course, very much. Yeah. So tell me, after your education, Tehseen bhai,
उसके बाद what did you venture into? Like you are a very successful entrepreneur. We would like our viewers to know a bit about the your entrepreneurial ventures and about the business you have dabbled in and the kind of success story that you have, in fact. So when I was in college, just and post college, पैसे कमाने थे. Mom ने कहा, boss, you are on your own. You've got to fight your own battles. So I started restaurants and lounges and nightclubs. Now, I didn't have the money to invest. So I would always have a partner or a businessman who would invest and I would run it. That did phenomenally well. Pune, Mumbai, Delhi, we did really, really well. ये हुआ 2009-10 तक. But बचपन से मुझे always, I was politically very, very aware, astute, and I had a political bent of mind. तो ये चल रहा था, and one day around 2009, I just got up and it was a weekday, and I said, अब मुझे नाइट क्लब रेस्टोरेंट्स नहीं चलाने. It just, and I got out of it. It was like that. कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, and I just क्या करेंगे? And I went to Delhi, and 2009 के चुनाव होने वाले थे उस वक्त. I didn't know anyone in Delhi. मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था. So I came to Delhi, we started working, and yeah, made it from there. Um, but in the meanwhile, I also did a lot of other businesses that I've been involved with. Even today, as an entrepreneur, अब मैं ज़्यादा businesses में so I did a lot of gyms. मेरी gyms थे. Gyms is again a brilliant business. Gyms का एक तो क्योंकि मुझे fitness का passion रहा है, sports का passion बचपन से रहा है, but also gyms में आपकी networking बहुत होती है. So you meet a lot of people, good people, especially high-end gyms में. But now, as an entrepreneur, I just invest in projects. I don't get involved in the running because I have other interests. So I don't run the projects. I don't personally own any business. Yes, I have a holding. Some of it is equity. Some of it is equity or interest. It depends. There's no straight jacket that fits all. Some of it is a debt, but it depends on how you want to do it. So different models, we work out different schemes. Yeah. Right. So tell us again, very, very interesting, which caused a lot of viewership. How did Big Boss happen? बिग बॉस हुआ मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया. आई डोंट चेक माई इंस्टाग्राम, मेरी टीम देखती है. The person said that he knew me, etc. So I spoke to my team. Replied saying that we will not entertain this DM unless you send us an official email from. So he sent an official email, but that email was not from Colors or Viacom .com. So I knew somebody who was the ex-president of Colors, a very dear friend. So I called him up, and he called back, and he said, "Yes, Colors do want you." And he arranged for the Colors team to send an official email, which then came through Colors and Endemol. Endemol is the one that produces. So Color sent it, and Endemol produced. And then Color introduced me to Endemol and said that they will take it forward. And the rest of it then happened. It was just, but it was always supposed to be limited, and yeah, it was great fun. I loved it. It was a great experience. Of course, everyone saw you, and everybody was. In fact, I don't know if I should say this, but we had there were only girls drooling over you. In fact, that time, Tehseen bhai, and they would only log into Big Boss कि भाई तहसीन पुलावाला वाला को देखेंगे हम यहाँ पे तहसीन पुलावाला आ रहे हैं भाई टीवी पे and इसमें big हंगामा. You are quite a rage बस हो गया था बिल्कुल वहाँ पे. Thank you. So that's what, and then you have done other reality shows as well, which have been Lock very, up. very popular. In fact, yes. Yeah, So yeah. tell me, Lock up tell was me great. about that. Ji. Lock up. Ekta told me to do it. Ekta is a friend. I would do anything for her. And when she told me to do it, I didn't ask her why. She only told me one thing, that Kangana is hosting it, and do you have a problem? And I said no, as long as. But I couldn't give. I obviously wouldn't be able to give the amount of time for the entire duration of the show. They wanted to make a show that was very different from Big Boss in the sense where opinions were spoken. Also, this was being streamed 24 hours live. So इसकी streaming जो थी lockup की वो 24 घंटे थी. So you'd be on camera 24 hours. The Big Boss में क्या होता है? You're on camera 24 hours, but वो एक घंटे का ही दिखता है. Lockup was 24 hours. So the main USP. So Big Boss का main USP वो एक घंटा जो आप देखते हो. उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग पिछले सीजन से शुरू हुई है, बट उतना उसमें इतने लोग लॉग इन नहीं करते. लॉकअप वाज सपोज्ड टू लॉग इन ओनली फॉर दैट. सो लॉकअप पीपल वर इवन लॉगिंग इन एट 3 o'clock, 4 o'clock. So it was amazing as an experience. I made great friends in lockup.
relationships that I will hope to keep for life. इनफैक्ट मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि एकता की गणपति है, तो वहाँ पर तो आई होप टू मीट अप विद लॉट ऑफ पीपल एंड या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट. Gee, tell me one thing. Also, since you've been a very popular television personality, very popular face on television, be it चाहे debates हो, चाहे reality shows हो, चाहे कुछ भी हो. So tell me. So you don't appear to be camera shy at all. I mean, No. that's one USP that I would say you would be having. So that USP of not being camera shy, has it helped you as a television debate panelist or in reality shows or wherever you've appeared? In fact, Tehseen bhai. So I don't know if I'm camera shy or no. As an individual, I think I'm very. I have different sides to my personality. So there are some days I just want to. I love being alone. I love spending time with myself, and I never get bored. But I also love being out, and neither is a comparison or a. I love both of it. So sometimes it's like, what is true? Do I like being alone or do I like being in a crowd? Similarly, I don't like my privacy being invaded. I like being alone. So even if I'm in a nightclub or a restaurant and somebody's filming, I tell them, don't take me, don't take my picture. I don't like it. But at the same time, I'm very okay being in front of a camera. So it is a sort of a dichotomy at times. One which I've not thought about too much. I just say, Joe, whatever I enjoy in the moment, I enjoy in the moment. So yeah. So I do like it. But with debates, the thing is that what I try to do, जो मैं कोशिश करता हूँ, एक तो मैं सब्सटेंस लाओ डिबेट के अंदर, पॉइंट्स लाओ. दूसरा, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता हूँ डिबेट्स में. मैं ये सोचता हूँ सही कि बात. बदतमीजी करना, True. क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट है और बहुत सारा कंटेंट है बोलने के लिए, तो बदतमीजी में समय वेस्ट होता है. I तो have मैं seen you handle the most difficult panelist जो बदतमीजी पे उतराते हैं ना, who are not matching with your views. आप बड़े कायदे से in a very polished, sophisticated manner you deal with them, and you deal with them like how very nicely, which only Tehseen Poonawala can do. And we would like to also would like to know how. बिकॉज आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे देखो, मेरा मकसद क्या है कि आवाम जाने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, करेक्ट. और अधिकतर जो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो हाइडिंग द फैक्ट. तो जब मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू आवाम तक पहुंचे, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव दूँ, तो अगर मैं लड़ाई में अपना समय वेस्ट करूँ या अपना समय इस चीज में वेस्ट करूँ, ईगो के अंदर, आपने मुझे ये कहा, आपने मुझे वो कहा, तो माई पॉइंट्स वोंट गो थ्रू. आई रादर पुट माई पॉइंट्स अक्रॉस और लोग जज करें, चाहे वो किसी और के सपोर्टर्स हो, चाहे वो मेरे ऑपोजिट हो, चाहे वो हुकूमत के सपोर्टर्स हो. मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज कह रहा हूँ, तो मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने के लिए आया हूँ. मैं वहां पर किसी से लड़ाई करने, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ. मैं ये सोचता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम सेइंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट केयर. आपको अगर आप कल मुझे कहते हो कि आप एरोप्लेन हो, क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि मैं एरोप्लेन नहीं हूँ. अगर आप मुझे कल कहते हो आप एक शिप हो, मुझे बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि मैं शिप नहीं हूँ. तो अगर आपकी ओपिनियन मेरे बारे में क्या, मुझे उससे क्या मतलब है? आप एक पैनलिस्ट हो, मैं एक पैनलिस्ट हूँ. आपको जो कहना है आप कहिए. अगर आपका कंटेंट ये है कि आप मुझे बुरा करोगे, कहना चाहते हो, तो और गुड लक टू यू. मेरा कंटेंट आपके साथ लड़ना ही नहीं. मेरा कंटेंट, मेरे पॉइंट्स रखना है, तो वो मेरा कंटेंट है. मैं अपना काम करूंगा, आप आपका काम करो. जी, वेरी वेल सेड. तो भाई मेरे को एक बात समझनी है कि देखिए आपके जो पॉइंट होते हैं, आपने बोला कि आप हुकूमत के खिलाफ तकरीबन आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अभी जो करंट बहुत हुकूमत मुद्दों है. पर. हाँ, तो मेरे को ये बात समझनी है कि जैसे कोई कोई ऑपोजिशन में हो गया, फर्ज करिए, तो क्या उनका काम है कि जो सरकार कोई भी हो, फर्ज करिए कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में थी या अभी बीजेपी पावर, सरकार जो सेंटर में कोई सी भी हो, क्या ऑपोजिशन का ये काम है कि सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करना है, या उसको समझना है, फिर उस पे उसके हिसाब से कार्रवाई करनी है? जैसे कि शशि थरूर, वो ऑपोजिशन के हैं, मगर वो कहते हैं कि भाई जब सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो बोलिए आप कि अच्छा काम किया है. आई एग्री और विद दैट. ओके, आई एग्री विद यस, दैट. यस, दैट्स जैसे व्हाट आई मैं वाज कमिंग. जैसे मैं एग्री करता हूँ कि 370 हटाना चाहिए था. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. अब इसमें बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं कि 371 है इंडिया के अंदर, 371 ए टू जे है, नागालैंड की ऑटोनॉमी है, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट हायर लेवल ऑटोनॉमी, नॉट लोअर लेवल ऑटोनॉमी. ये सारी चीजें, आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट. बट आई पर्सनली फेल 370 शुड हैव गॉन. अब हम इसमें डिबेट कर सकते हैं जिस तरह से हटाया गया, क्या वो संवैधानिक था, नहीं था, क्या असेंबली का कॉन्सेंट लेना जरूरी था. आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट. बट आई एम इन फेवर ऑफ 370 गोइंग. तो जो हुकूमत सही करती है, आपको यू गॉट टू एग्री विद इट. जो वो सही फेयर. आपके हिसाब से नहीं करती है,
You cannot just blindly oppose it. You have to give a reason logically आप उसे क्यों oppose कर रहे हो, और उस लॉजिकल रीजन को आपको लोगों के सामने रखना चाहिए. सो Fair enough. जैसे जैसे सीए का कानून है, मैं इसे ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूँ. मैं ये 100% मानता हूं कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड है, खास करके पाकिस्तान से जो हिंदू डिस्प्लेस्ड है, उनको हमें लेना चाहिए और सिटीजनशिप देना चाहिए. बट इस ये द आंसर? नो. द आंसर इज वो ऑलरेडी हमारे देश में सरकार के पास ये पावर है कि आप उनको जो ऑलरेडी है उनको आप उन उतने लोगों को आप सिटीजनशिप दे दो. उसके लिए आप नया कानून ला रहे हो जिसमें इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उन लोगों को ला रहे हो. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर. बट दैट डज नॉट मीन आई एम अपोज्ड टू समबडी एल्स गेटिंग सिटीजनशिप. तो आई थिंक हम जितना इसे कॉम्प्लेक्स और उसे हम अनराइवल कर सकते हैं, मुझे लगता है वो लोकतंत्र और जमहूरियत के लिए बैठते हैं. हम अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑन सोशल मीडिया एज हो क्या गया है, यू आर फॉर अस और अगेंस्ट अस. लोगों को कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं समझनी है. एंड आई थिंक दैट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. आई थिंक डेमोक्रेसीज में हमें कॉम्प्लेक्सिटी समझनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि सामने वाला हमारा दुश्मन नहीं है. उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें समझना चाहिए. तो एज ऑपोजिशन, I feel that I should listen to another point of view, because when I'm in government, I would like somebody else to understand my point of view and then oppose me. And if I want that for myself, I must do the same for the other person. And that's when democracy will be healthy. You're right, absolutely. इस बात से एक और बात आती है, but though it's about you, it's not about your brother, but you have a brother. He's also very well known, Shadad Poonawala, and often his views are supporting the present government, often. He's the And national spokesperson now. So in he's fact, 100% supporting them. Yeah. Yeah. yes, in But fact, that, he's a BJP national spokesperson. Yes. Yeah, in fact, I've been on studios with him when he was hosting shows for India News that time. हम वहाँ पे बैठे, and I saw an anchor sitting with ease, yes. calm, composure. He knew, and one thing, he knew his beans very well. So, and he was, despite the fact, he was keeping a very, because since he was the moderator, right? He was the anchor, he was moderating the show. And चाहे फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो, सबको बराबर वक्त दे रहे थे, सबकी बात सुनी जा रही थी वहां पे. So now, obviously, on television, both your views would not match, or forget about. So I would like to know, off screen at home, how is your relationship with your brother? So unfortunately, what's happened is Shahzad and me don't share a good relationship. But it's got nothing to do because he's joined the BJP. That's not the main reason. मेरे बहुत सारे दोस्त बीजेपी में हैं और उनसे अच्छे संबंध है. दिक्कत वहाँ नहीं है. दिक्कत कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ गई, और कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से हमारा बिल्कुल अब रिलेशनशिप नहीं रहा है. जब से he had that issue in 2017 with the Congress party. So it's been now 5 years. हम स्क्रीन पर बात करते जो एक दूसरे के खिलाफ है, but we don't really interact. हमारी कोई बातचीत नहीं होती है. It's I'm sorry to. unfortunate. Yeah, it's unfortunate because I brought him up like a son. But sometimes it's good that क्योंकि बात पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर अगर स्टॉप हो जाए तो ठीक है. But honestly, I do believe, and I'm saying this from my heart, I think he's super talented. I do believe, I would of course love that he was in the Congress and he was brilliant, but I do think he is amongst the 3 top spokespersons in our country. Oh, no Along, doubt. There's no doubt. yeah, he's बल्कि phenomenal and he's very talented. There is no doubt about it. His command on English, Hindi is fantastic, and he's a very talented person. हमारी नहीं बनती वो ठीक है, but वो है talented. बल्कि उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो, जो वायरल तो आप दोनों के हर एक वीडियो हो जाते हैं, बस जस्ट द पूनावाला ब्रदर्स हैव टू बी देयर, दैट्स इट, इट इज गोइंग टू गो वायरल. वो दैट इज लाइक अ गारंटी, ठीक है. बट देयर वाज अ वीडियो खास तौर से जब वो हनुमान चालीसा रिसाइट कर रहे थे, एंड ही सेड इट सो वेल, सो फ्लुएंट, एंड ही सेड आई डोंट वांट टू स्टॉप मिडवे, आई डोंट वांट टू, मैं अपना अपमान नहीं करना चाहता, मैं इज्जत देना चाहता हूं. बट देन द अदर पैनलिस्ट propelled him and compelled him and poked him. So he recited fully, and he was so fluent. And then it was like, everybody was appreciative of it. इसलिए देखो भाई, इनका नाम है शहजाद पूनावाला, ये मुसलमान है, लेकिन ये हनुमान चालीसा इतना अच्छा रिसाइट कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत बड़ी बात है. And I'm sorry to have brought up this topic, in fact. And now coming back to your fitness, Tehseen bhai, Yeah. you are, I mean, though we can only see you till here, but we can't see your rippling muscles.
But tell me about your workout regime. How much? Yeah, there you are. 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 So I work out every day, whether in Pune or in Delhi. Again, I'm very fortunate that I have a gym at home. I have a swimming pool at home. So I have a swimming pool, a gym Oh at wow, home. that's luxury. That's Yeah, yeah. luxury. So I'm very, very fortunate. So I work out every day. But workout is one part of it. The other part of it is I eat only one meal a day. तो मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक ही बार खाता हूँ. और पिछले एक महीने से मैंने शुगर कंप्लीटली छोड़ दी है. तो अब मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेता हूँ, चाय हो कॉफ़ी हो. डिजर्ट्स मैंने कंप्लीटली छोड़ दिए. और एक दिन हुआ, आई जस्ट इट वाज संडे, आई चीटेड एंड मैंने संडे शाम को डिसाइड किया आज मैं चीटिंग करूँगा, कल से मैं छोड़ दूंगा. और उस बात को एक महीना हो गया, आई नॉट हैड अ डिजर्ट. मैंने तो आई नॉट इवन हैड टमेटो केचप क्योंकि उसके अंदर शुगर होता है. तो फ्रूट्स ठीक है, फ्रूट्स के अंदर वो, बट आई ईट ओनली वन मील अ डे. मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूँ बस. Wow, I mean that is really, I mean that is something आपसे सीखना चाहिए. But you know, they say for working out, diet is very important. तो इतना या egg whites or this kind of diet, protein shakes और ये वो करके, then people pump up. But then you said you eat only one meal a day. वन And मील अ what डे, time is that? And what time is that meal that you consume? जनरली इन द इवनिंग अराउंड 5-6. तो मतलब between सुबह से 4, आप भूखे रहते हैं, मतलब आप सुबह को what about bed tea and all? nothing, Okay. not even coffee through the day. 4 o'clock or 5 o'clock or 6 o'clock. After 24 hours, I eat once a day. हर एक महीने में 3 दिन मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, सिर्फ पानी पे रहता हूँ. So I completely reboot my body. 5 days a week मैं सिर्फ प्रोटीन्स और गुड फैट खाता हूँ. So I eat protein and good fat, जो एक मील होता है. So it'll be lean protein meat and good fat, so butter, cheese, ghee, good fat. And yeah, that's it. और फिर 2 दिन तो आई चीट बिकॉज सैटरडे संडे बिकॉज इट इज चीट डे. तो उस दिन मैं रोटी खा लूंगा, राइस खा लूंगा, चीटिंग कर लूंगा. So that's how it is. Wow, I mean, you know, it's So Sunday I amazing. fully cheat, but now I don't have desserts also. So Sunday cheating, but no desserts and no chai. बहुत कुछ सीखने को मिला था तस्लीम भाई आपसे वाकई में. Yeah. एंड यू नो, रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने वक्त निकाला. एंड यू नो, आई एम रियली रियली ट्रूली ग्रेटफul to you. And I won't take much of your time. I know you are busy and you are very very kind and you are very very sweet and you're a very simple person. That's you know, that's the gentleman, इसको कहते हैं simple living but high thinking. That is Sure. Tehseen Poonawala for you all. Thank you so much. Great. And before we part ways, you know, any last message you would like to give to our viewers? जो भी आपको कुछ कहना है, a message you want to send across to the universe. So one thing that I always tell everybody, I also say on Twitter, is live in gratitude. This I do a lot. I practice gratitude. सुबह जैसे मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 से 5 में मेडिटेट करता हूँ. बट जब भी उसके बाद में उठता हूँ, से 6:30 7, जब भी मैं पहले 20 मिनट ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को, आई सेंड ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स. खाने से पहले सेंड ग्रेटिट्यूड, पैसे देने या लेने से पहले सेंड ग्रेटिट्यूड. लिव इन ग्रेटिट्यूड बिकॉज वो आपको हम्बल रखता है, वो आपको ज़मीन पर रखता है. और ये चीज़ याद रखना कि आपके सबसे बुरे दिनों में यू आर बेटर ऑफ देन मोस्ट पीपल इन देयर बेस्ट डेज. तो ये हमेशा आप याद रखो. ऑलवेज बी हम्बल बिकॉज व्हेन यू आर हम्बल एंड यू आर ग्राउंडेड, that's when you can sort of achieve more things. Like I said, live in the moment. कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. And yeah, just be happy and don't make things personal against people. Live in happiness. दूसरों को जीने दो और आप प्यार से जियो और एक दूसरे के साथ रहो. जी भाई, शुक्रिया. Thank you very much. Thank Truly you. grateful to you, brother. Thank Lots you of so love to you. much. Thank Lots of you. love. Thank Yes, you. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you.